video we study the varicose veins. So what is the varicose vein? Varicose veins are the enlarged veins. Any vein may become the varicose, but most commonly जो legs की vein है वो ज़्यादा affect होती है. That is because of the standing and the walking upright increases the pressure in the veins of your lower body. हम जो लोग ज़्यादा खड़े रहते हैं या वॉकिंग करते हैं तो उनका पूरे बॉडी का प्रेशर लेग्स पे आता है और वो वेन पे प्रेशर आता है और उसीलिए वो वेन्स आर एनलार्ज्ड हो जाती है वो सारी वेन्स. सो इधर इमेज में भी दिखाया है नॉर्मल वेन्स एंड द वेरिकोज वेन. सो just like the varicose vein, there is the another condition that is the spider veins. So it is most commonly occur on the face. So it is one of a cosmetic concern problem. Now in the varicose vein, there are the pain and the discomfort is occur. So sometimes the varicose vein may lead to more serious problems. So the varicose vein may also signal the higher risk of the circulatory problems. So it suggests that there is any defect in the circulatory problem. So the treatment may involve the self-care measure or the procedure by your doctor to close or the remove the veins. Now the symptoms of the varicose vein. So first of all, the varicose vein usually don't cause the any pain. Signs you may have the varicose vein include. तो क्या क्या साइन आएंगी कि वो जो वेन्स है वहाँ पे डार्क पर्पल और ब्लू इन कलर हो जाएगी. वो वेन्स प्रॉपरली हमें दिखेगी ब्लू कलर की. वेन्स दैट अपीयर ट्विस्टेड एंड द बल्जिंग ऑफन लाइक अ कॉर्ड्स ऑन योर लेग्स. So these are some pictures of the varicose veins. If the symptom is present, there is an achy or a heavy feeling in your legs, burning, throbbing, muscle cramping and the swelling in your legs. Worse pain after sitting or standing for the long time. ज़्यादा देर बैठे रहने या फिर खड़े रहने के बाद बहुत ज़्यादा पेन होगा. इचिंग अराउंड द वन और द मोर ऑफ योर वेन्स. जो वेन्स एनलार्ज होगी और जो डार्क कलर की हमने जैसे इमेज में देखी थी वहाँ पे इचिंग होगी. स्किन अल्सर नियर योर एंकल विच कैन मेक यू हैव अ सीरियस फॉर्म ऑफ द वास्कुलर डिजीज. Now let's know some factors about the spider veins. It is similar to the varicose vein but it is smaller and they are also found on the skin surface and it may be red or a blue and it also found on the legs but most commonly it is seen in the face and it is various in the size and it is look like a spider's web, so that's why it is called as a spider veins. Now what are the causes of the varicose vein? So first of all, we know that the artery carries the blood from your heart to the rest of the body and the veins returns the blood from the rest of the body to the heart. So the blood can be recirculated. So to return the blood to your heart, the vein in your legs must work against the gravity. यानी कि जो legs की vein है वो हार्ट की तरफ ब्लड भेजेगी तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रही है. सो मसल कॉन्ट्रैक्शन इन योर लोअर लेग एक्ट एज ए पम्प एंड द इलास्टिक वेन walls help the blood return to your heart. So tiny valves in your veins open as the blood flows towards your heart, then close to stop the blood from the flowing backward. So इसीलिए varicose vein होती है. Now the first one is the age. So as you get the older, your veins are lose the elasticity and causing them to stretch. जो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वेन्स की इलास्टिसिटी डिक्रीज होगी. द वाल्व्स इन योर वेन्स में बिकम वीक. वाल्व्स वीक हो जाएंगे. सो अलाउइंग ब्लड दैट शुड बी मूविंग टुवर्ड्स योर हार्ट टू फ्लो द बैकवर्ड. जो ब्लड ऊपर जा रहा है वो ऐसा ऊपर नहीं जाएगा और नीचे आएगा. एंड then the veins are enlarged and it becomes the varicose veins. So the veins appear blue because they contain the deoxygenated blood which is in the process of being recirculated through the lungs. मतलब जो ब्लड ऊपर हार्ट तक जाना था वो ऊपर जा नहीं पाता क्योंकि वाल्व्स और वो सब वीक हो गया है. तो वो सब ब्लड जो है वो वेन्स में ही एक्यूमुलेटेड होगा और वहाँ पे डार्क ब्लू कलर की हमको वेन्स एनलार्ज दिखेगी. Now the second cause is the pregnancy. So pregnant women में ये मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है. तो प्रेगनेंसी में कैसे होता है कि प्रेगनेंसी में जो वुमन का है वो ब्लड वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हो जाता है बट जो लोअर लेग्स है हमारे वहाँ पे उनको ब्लड सप्लाई पूरा नहीं मिलता और इसी सर्कुलेटरी चेंजेस की वजह से
ये सब होता है. So the circulatory changes is designed to support the growing the fetus, but it can produce an unfortunate side effects. तो enlarged veins in your legs ये साइड इफेक्ट होता है. सो वेरिकोज वेन may surface for the first time or may worsen during the late pregnancy. लेट प्रेगनेंसी में बहुत ही वर्स कंडीशन हो जाती है. लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही वर्स कंडीशन क्यों होती है? क्योंकि यूट्रस में जो बेबी है वो फुल टर्म में होता है. सो इसी की वजह से. सो चेंजेस इन योर हॉर्मोन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट मे ऑल्सो प्ले अ रोल. Varicose vein that develops during the pregnancy generally improve without medical treatment within the 3 months after the delivery. So if it is not treated, then the complications of the varicose vein are the ulcers and the blood clots. The extremely painful ulcers forms on the skin near the varicose vein and the blood clots are also formed, and it is also known as the thrombophlebitis. So now in the treatment, first of all self-care, so such as exercising, lose weight, not wearing the tight clothes, elevating your legs and avoiding the long period of the standing and the sitting. And the compression stocking. So wearing the compression stocking is the first approach of the treatment. The other treatment is the sclerotherapy, laser surgeries, catheter and the vein stripping. Now, the lifestyle and the home remedies. So, there is no way to completely prevent the varicose vein, but improving your circulation and the muscle tone can reduce your risk of the developing varicose vein. So, exercise, watching your weight, eating a high fiber and low salt diet, avoiding the high heels and tight hosiery, elevating your legs, and changing your sitting and the standing position regularly.